Hi everyone. So let's start the session today's. Let me After validating that, we will make sure that it will work in all the environment and we will make the variables also. So in the previous session, we have talked about the scripts, how we are validating those scripts of the response as well as all the cookies, all the responses, all the JSON data, each and everything, whatever we are getting the response from the server. So in the first and two parts, we have talked about all the things. Now let me take you the final and the last one where we are going to cover the entire script as well as how whenever we are switching from the uh, test environment to development environment or the deploy environment or final the production environment, how this we are going to validate. Okay, so let's take one more example of the JSON where we are going to validate all these things, and over here we are going to do it by a fresh way so that each and everything will be clear to you. Okay, let's go ahead how we are going to validate this. So in the first and second part we have already know that we have covered we have already covered this this that how we are going to use the script part. Okay, pre-script, post-script. We have only talked about the post scripts. Let me take you uh, to one more thing, like how we are going to validate some of the other things. So before that, let me first start my server. So how we are going to start my server? So let me take you where go with student data. So we have seen it got we have seen it got running with this endpoint. So I have copied this. So this will be the new collection. Let's rename it is student data. Okay, now we will create a folder. Instead of that, we will create a folder. Let's create a folder, add folder, and let's rename this student details. Now we are going to add a request. Okay, so this request I'm going to add it with the URL. This is my URL, and uh, let me go with the get, and then let me go with another with post. This will be my post, and then let me create one more request, one more request where patch will be there. Okay, so patch will be there. So we are going to modify something over there, and then finally we are going. Okay, good. So we are fetch a student from here, create
is student modify, and then we are finally deleting. Okay, so I have already saved. Let me save this. So in this, what we are going to do, we are fetching. So how we can fetch by giving the ID. So so what is the ID? How I will get the ID? From here, if you will see, this is the ID and the name is HCL Tech. Okay, so let me add this and get the info. So are you getting? This is the data which I have put it over there. Now it is reflecting over here. And now the same thing, we are creating the same thing over here, but we are creating it. So for creating what, how we can do that? We can go to body and raw data, and then the JSON will be there. So how we are going to do that? So we are going over here and we are providing this ID. So this will be the ID, and this I am not going to give it, and I am giving this as Mad Hawk. Mad Hawk, and last is that telnet, and location is Odisha. Okay, and the designation is director. Director. Now, now let me know what I have missed out. Now I'm sending the request. So it is 201. It's created. Okay. Nothing was missed out. Just concentrate over here. Why we are doing it, you will get to know. 5012, 5012, and it's 5012, and there I am going, and in the body I'm going, and I am creating the raw, and the raw I am providing the value with designation only, designation as designation as senior test manager or senior tester. I'm just changing it, senior tester. Okay, now after that I will modify it. Now this got changed. Now finally we are going to delete this. So for deleting, just 5012, and now send. So we have seen this got deleted, and let me validate this 5012 whether this is correct or not. No, it's not found because it got deleted. Okay. So what you have analyzed, like what we have analyzed in the entire thing is that, like,
First of all, we have to create this. After creating it, now let me refresh and check whether that value is reflecting. No, it's not reflecting. So what is the thing? Like we have created a post. If I will go over here, the post, if I will go over here, the fetch, if I will go over here, patch, and if I'll go over here, delete. What is the common in all of them? So if you will see, the common in all of them is this. If you will notice, the common in everyone is having is that is like there is a we have done the curd operation, create, retrieve, update, and delete. Update or edit both are the same. So in the create, we have used the same patch. If you will notice, the URL is the same. Any retrieve also the URL is same. Only at the end we are providing the ID, same as with ID and delete method. So what we have done over here, हम लोग यहाँ पे जस्ट कॉमन हम लोग का जो है इस सब में यूआरएल सबका सेम ही है. पोस्ट में भी पोस्ट में यूआरएल सेम है, और अदर कोई भी मेथड है उसमें हम लोग उसका आईडी ऐड कर दे रहे हैं, यानी बेस यूआरएल हमें सारे कर्ड ऑपरेशन में सेम ही है. ठीक है. अब क्या होता है, एक लैब इन्वायरमेंट होता है, स्टेज इन्वायरमेंट होता है, और एक डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट होता है. तो लैब इन्वायरमेंट में जो भी यूआरएल होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जरूरी नहीं वो स्टेजिंग में भी वो सेम यूआरएल और सेम डेटा पे ही काम करे. डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे वो काम करेगा. उसी तरह डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है. तो व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लैब इन्वायरमेंट, staging environment, and deployment environment, deployment production environment, before moving to production we are using deployment environment, और उससे पहले होता है staging environment. लैब environment जनरली जो है खुद का सिस्टम का खुद सिस्टम ही होता है, सारा चीज वन प्लेस में होता है. यानी कहने का मतलब है लैब जो होता है वो वो सारा चीज डेटाबेस उसका एक ही जगह होता है. ठीक है. तो स्टेजिंग में क्या हो सकता है, स्टेजिंग में जो है डेटाबेस अलग हो सकता है, सर्वर अलग हो सकता है. बट डिप्लॉयमेंट में सेम एज प्रोडक्शन की तरह हम लोग उसको चेक करते हैं. तो सारे में हम लोग का ये देख रहे हैं कि हम लोग का यूआरएल जो है तीनों इन्वायरमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो उस सिनेरियो में जब हम लोग पोस्टमैन पे वैलिडेट करेंगे तो बार बार मेरे को इसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा. करेक्ट. यूआरएल मेरे को चेंज करना पड़ेगा. तो उसके लिए वी हैव टू गो टू over here. Okay. And if I will go over here, we will go to script, and in the script pre-request what I will do, I have to do pm dot. अब देखो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल है. ठीक है. इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और और लोकल वेरिएबल है. ठीक है. तो कितने तरीके के वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल जनरली हम लोग के 5 तरीके के वेरिएबल्स रहते हैं: ग्लोबल, कलेक्शन, इन्वायरमेंट, लोकल एंड डेटा. तो ग्लोबल वेरिएबल, कलेक्शन वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड डेटा वेरिएबल. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. तो सबसे पहले हम लोग देखे थे पार्ट 2 में कि कलेक्शन सबसे बड़ा होता है. ठीक है. इफ यू आर रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन one thing. Let me take you over there. Okay, it's not over here. I have drawn it. Okay, but let me tell you how we are going to use this. So, सबसे पहले पूरे पोस्टमैन में सबसे बड़ा होता है कलेक्शन. If you will notice over here, the collection is the main thing. Okay, inside a collection there is a environment. Okay, if you will notice over here, the entire thing is a collection. Okay, inside the collection
there is the there is a there is a environment. Okay, inside a collection there is a different environment, means I can say I am working on different folders, so each folders have their own environment. Yani if I will over here, if I will talk about student data is my collection, student details is my environment, and under this all are the request. Okay, if I will create another folder and that is student details 2, then the environment name then the environment 2 is student details 2. Are you getting? if I will create another, मैं एक और ऐसा ही student details 2 के नाम पे बनाऊंगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेटा का दो इन्वायरमेंट हो गया, स्टूडेंट डिटेल हो गया और स्टूडेंट डिटेल 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी दो इन्वायरमेंट हो गया, यानी कलेक्शन हुआ, कलेक्शन सबसे बड़ा हुआ, कलेक्शन से भी बड़ा ग्लोबल होता है। जैसे मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज अगर डिफाइन करते हैं तो पूरे इस सारे कलेक्शन में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल सा एग्जांपल, आई नो एवरीवन नोज जावा ओवर हेयर, तो जावा में एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल आप हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल विद इन द स्कोप हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेम एज दैट सबसे बड़ा होता है ग्लोबल वेरिएबल, हम लोग इस कलेक्शन के भी अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। और अगर किसी कलेक्शन में यूज करना है तो कलेक्शन वेरिएबल, और उस कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है, यानी ये मेरा स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट के अंदर हो सकता है कि लैब इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, लैब इन्वायरमेंट, जो तीनों इन्वायरमेंट है वो तीनों इन्वायरमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो उस लिए हम लोग इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, और लोकल, लोकल यानी इट इज एप्लीकेबल ओनली ओवर हेयर। Okay, then finally the data variables, the data variables we will discuss it. Okay, but you understand it, the four variables. First global variable, किसी भी कलेक्शन के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया पहला जो है ग्लोबल वेरिएबल, किसी भी कलेक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, और किसी एक कलेक्शन के अंदर यूज करना है तो कलेक्शन वेरिएबल। अब उस कलेक्शन वेरिएबल के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली यूज करते हैं तो वो हो जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। फिर अगर रिस्पेक्टिव रिक्वेस्ट में यूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का लोकल वेरिएबल। ठीक है, फाइनली फिर डेटा वेरिएबल होगा। ओके, सिंपल। नाउ लेट मी टेक यू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, अ, ये देखेंगे कि इसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे। इसमें हम लोग ऑब्वियस ही बात है, हम लोग कलेक्शन वेरिएबल ही यूज करेंगे। क्यों कलेक्शन वेरिएबल यूज करेंगे? कलेक्शन वेरिएबल इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आप देखो, अगर कलेक्शन ये हम लोग इसी के अंदर यूज करना चाहते हैं, इस यूआरएल को, ये जो मेरा यूआरएल हुआ इसी कलेक्शन के अंदर यूज हो रहा है, इसके बाहर यूज नहीं हो रहा है। तो अगर बाहर में यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग कलेक्शन वेरिएबल, और ऑलवेज सजेस्टेड वी विल यूज कलेक्शन वेरिएबल। ओके, सेट किए एंड देन we will give then we will give okay, okay, we will give this is collection URL, and then we will give this URL. Okay, and let me do this collection URL. Now it is green color, let me change this. Okay, it's a red color, now it's working fine. Now see what I have done. I have created a collection variable over here by defining pm.collection variables dot set. मैंने क्या आपको बता दिया था कि हर
हर चीज आप स्टार्ट कर सकते हो पीएम के साथ। पीएम इट डिनोट्स दैट पोस्टमैन डॉट। अब आप कुछ भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने कलेक्शन वेरिएबल्स का यूज किया है। वेरिएबल्स का यूज किया है। नाउ अब कलेक्शन वेरिएबल्स का यूज करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेक करते हैं कि ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, everything is the same. I have just changed in the one place. Okay, now let's run this. So see, I am getting the I am getting the same thing over here, and uh, let me do the same thing over there. Let me do the same thing over here. Same, I am going and I am just giving over here CURL. CURL. Now let's see whether this one I am getting the data or not. Okay, what is 6847? 6847. Now let's run this. Yeah, so we are going absolutely on the correct path. So suppose I'll just give a example. Suppose you have created, suppose you have created this one. So suppose you have created, where is it's gone? Yeah, suppose you are working on a lab environment right now, and now you are working on a stage environment. Then you are working on a deployment environment. This happens very rarely when all most of the bugs is resolved. Then only you are moving from one environment to the another environment, and then finally to the pre-deployment environment or a deployment environment. Correct? तो उस सिनेरियो पे क्या होगा? उस सिनेरियो पे हम लोग का जो लैब का जो है यूआरएल, वो जो है चेंज हो जाएगा most of the time, like 80 to 90% is the chances they will change the all the things. So उस सिनेरियो में आप जो है यहाँ से यूआरएल को चेंज किए बिना only one place you are going to run lot of the things, lot of your code going to be run from there. Now after coming over here, what you will do, like again you have noticed that your ID is also changing. So ID is what? ID is going to work. You know that it is going on this environment as well as it will work in this entire collection. Correct? तो हम लोग उसको ऐसे भी दे सकते हैं pm dot request collection variable dot set cid. देखो, now I am saying you that AI is also taking over over here. Like if you will press this, they are suggesting you like tell what postman what to do. So I will tell that create create local variable variable for ID. Okay, let's see how it is going to work. So this is created the the variable local variable over